SA 700 Forming an Opinion and Reporting on Financial Statement. SA 700 Forming an Opinion and Reporting on Financial Statement. This essay deals with auditor responsibility. This essay deals with auditor responsibility to form an opinion on financial statement. It also deals with form and content of auditor's report that is issued as a result of audit of financial statement. This essay deals with auditor responsibility to form an opinion on financial statement, and it also deals with form and content of auditor report issued as a result of audit of financial statement. As per this essay, objective of auditor is to form an opinion on financial statement. As per this essay, the objective of auditor is to form an opinion on financial statement and express clearly that opinion through a written report. बोलता है एज पर दिस ऐसे द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू एक्सप्रेस क्लियरली दैट ओपिनियन थ्रू ए रिटन रिपोर्ट. बोलता टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के दो तरह का होता है, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क. General purpose framework FRF designed to meet the common financial information need of wide range of user is known as general purpose framework designed to meet the common financial information need of wide range of user is known as general purpose framework. A special purpose framework FRF designed to meet the financial information need of a specific user is known as a special purpose framework. FRF designed to meet the financial information need of a specific user is known as a special purpose फ्रेमवर्क. FRF बोलता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर एज पर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क प्रिपेयर एज पर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क. ऐसे 800 फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, आ मतलब बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडुकेटली डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्टेड एंड अप्लाइड. Accounting policy financial statement adequately disclose the significant accounting policies selected and applied. Accounting policies selected and applied are consistent with the financial reporting framework and are appropriate. Financial reporting selected and applied are consistent with the financial reporting framework and are appropriate. Accounting estimate made by the management are reasonable. Accounting statement made by the management are reasonable. Information presented in the financial statement is relevant, reliable, comparable and understandable. Information presented in a financial statement is relevant, reliable, comparable, understandable. बोलता financial statement provide adequate disclosure to enable the intended user to understand the effect of material effect बोलता to understand the effect of material transaction and effect. Financial statement adequately disclose the financial statement provide the adequate disclosure to enable the intended user to understand the effect of material transaction and effect. Terminology used in financial statement, including the title of each financial statement, is appropriate. Terminology used in the financial statement, including title of each financial statement, is appropriate. Forming an opinion on financial statement. Auditor shall form an opinion on financial statement whether the financial statement are prepared as per applicable financial reporting framework. Auditor shall form an opinion whether the financial statement are prepared as per applicable financial reporting framework. बोलता auditor shall evaluate the requirement of applicable financial reporting framework. उसको क्या बोलते हैं, आ बोलता है adequately disclose the accounting policy, adequately disclose the significant accounting policy selected, applied or consistent. Accounting estimate made by the management are reasonable. Information presented in the financial statement are relevant, reliable, comparable. Financial statement information presented in the financial statement are relevant, reliable, comparable, understandable. Financial statement provide adequate disclosure to enable the intended user to understand the effect of material transaction and event. बोलता है फॉर्म ऑफ ओपिनियन क्या होता है, दो तरह का ओपिनियन होता है. बोलता है मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन auditor shall express unmodified opinion when he conclude that financial statement are prepared as per applicable financial reporting framework. बोलता है auditor shall express unmodified opinion when when he concludes that financial statement are prepared as per applicable financial reporting framework.
Auditor shall express unmodified opinion when he concludes that financial statements are prepared as per applicable financial reporting framework. Modified opinion. Auditor shall modify the opinion. Auditor shall modify the opinion in the auditor's report as per SA 705. Auditor shall modify the opinion in the auditor's report SA 705 if auditor concludes that financial statements are not free from material misstatement or unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence to conclude that financial statements as a whole are free from material misstatement. Auditor shall modify the opinion in the auditor's report as per SA 705 if he concludes that financial statements as a whole are not free from material misstatement or is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence to conclude that financial statements as a whole are free from material misstatement. बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है? ताप जी के रालोस, ताप जी के रालोस, ताप जी के रालोस बोलता है, ताप जी के रालोस होता है। बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है? तो 14 पॉइंट होता है। 14 पॉइंट है ताप जी के रालोस। टी से टाइटल दैट क्लियरली इंडिकेट दैट इट इज़ द रिपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। Title that clearly indicate that it is the report of independent auditor. Addressee. Auditor's report shall be addressed. Auditor's report shall be addressed as required by the circumstance of engagement. Addressee. Addressee क्या होता है? Addressee क्या होता है? Auditor's report shall be addressed as per the requirement. As required by the circumstance of engagement. Auditor's report shall be addressed as required by the circumstance of engagement. Auditor's opinion क्या होता है? तो IS. Auditor's opinion क्या होता है? तो IS बोलता है फर्स्ट सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। फर्स्ट सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड ऑडिटर्स ओपिनियन अंडर द हेडिंग ओपिनियन। द ओपिनियन सेक्शंस ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट शैल इंक्लूड आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड। स्टेट उसके आई से आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड। एस से बोलता है स्टेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड। उसके बाद आई से फिर आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद रेफर्स टू उसके बाद फिर एस से स्पेसिफाई द डेट एंड पीरियड कवर बाय ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेफर टू notes and summary of significant refers to notes and summary of SAP मतलब significant accounting policy। basis for opinion क्या होता है? SSEE Auditor's report shall include sections directly following the opinion sections with the heading basis for opinion that audit was conducted that state that audit was conducted as per SA refers to a section that auditor's report describes the auditor responsibility under the SA and a statement that auditor is independent of the entity as per ethical requirement and a statement refers to code of ethics issued by ICAI. Statement whether the auditor believes that audit evidence the auditor has obtained is sufficient and appropriate to provide the basis for auditor's opinion। उसका ये 4 हो गया। टी से हो गया टाइटल, ए से एड्रेसी, फिर ए से हो गया तुम्हारा ऑडिटर्स ओपिनियन, उसे बी से बेसिस, जी से गोइंग कंसर्न ऑडिटर शैल रिपोर्ट एज पर एस 570। उसके बाद जी से गोइंग कंसर्न, के से की ऑडिट मैटर। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट एज पर एस 701। उसके बाद फिर A7 में अदर इंफॉर्मेशन ऑडिटर शैल रिपोर्ट एज पर एस 720। उसके बाद फिर 8 रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर responsibility for financial statement. Auditor's report shall include sections with the heading responsibility of the management for financial statement। उसके बाद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस सेक्शंस ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट शैल इंक्लूड ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर ऐसे ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट। उसके बाद फिर ऑडिट ऐसे से कंडक्ट हुआ है। उसके बाद फिर उसके बाद ऑडिटर्स का इंडिपेंडेंस। उसके बाद ऑडिटर कम्युनिकेट द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG। ऑडिटर कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG। ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर ऐसे ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट। ऑडिटर कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड डेफिशिएंसीज। ऑडिटर कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर अदर ऐसे
उसके बाद फिर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद 3 नंबर लोकेशन फॉर लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद लोकेशन कहाँ रहेगा तो विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विद इन द अपेंडिक्स टू ऑडिट रिपोर्ट विद इन द अपेंडिक्स टू ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट हैज रेफरेंस ऑफ वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट हैज रेफरेंस ऑफ वेबसाइट। उसके बाद फिर 10 तक हो गया। उसके बाद 11 12 13 11 में तुम्हारा आर से रालोस में क्या हो गया तो सबसे पहले रालोस में हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ए से हो गया ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओ से उसके बाद एल से हो गया लोकेशन फॉर डिस्क्रिप्शन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। RAL ओ से हो गया अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एस से हो गया तुम्हारा सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर। और PD साहब जी के रालोस PD मतलब प्लेस ऑफ सिग्नेचर मतलब सिटी वेयर द ऑडिट रिपोर्ट इज साइन डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। Auditor's report for audit conducted as per both standards on auditing issued by ICAI and international standards on auditing. Auditor's report for audit conducted as per both standards on auditing issued by ICAI or international standards on auditing. In addition to essay issued by ICAI, auditor may be required to conduct the audit as per international standards and other standards. If this is the case, auditor report may refer to essay in addition to international standards on auditing, but auditor shall do so only if बोलता है मतलब इस केस में बोल रहा है कि मतलब यदि ऐसे के अलावा ऐसे के अलावा यदि ऑडिटर जो है सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को के हिसाब से ऑडिट कंडक्ट करता है तो और ऐसा केस है तो ऑडिटर रिपोर्ट में रेफर्स टू ऐसे को उसको रेफर करना पड़ेगा इन एडिशन टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बट ऑडिटर शैल डू सो ओनली इफ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिक्वायरमेंट only if there is no conflict between the requirement of IAS and SA that would lead to form a different opinion. Auditor's report include all the elements discussed above. Auditor's report include all the elements discussed above when auditors uses the wording specified by the SA. When auditor's report refers to both IAS or AS issued by ICAI, auditor's report shall clearly identify the jurisdictions of other auditing standards. When auditor's report refers to both IAS international standards on when auditor's report refers to both international standards on auditing and SA issued by ICAI, auditor's report shall clearly identify the jurisdictions of other auditing standards. Supplementary information presented in the financial statement. If supplementary information that is not required by FRF is presented, बोलता है if supplementary information that is presented by FRF is not required by if supplementary information that is not required by FRF is presented with audited financial statement, auditor shall evaluate the supplementary information is integral part of financial statement. If supplementary information that is not required by financial reporting framework is presented with the audited financial statement, auditor shall evaluate whether the supplementary information is integral part of financial statement. When it is integral part of financial statement, supplementary information is covered by auditor's opinion. If it is not the integral part of financial statement, auditor shall evaluate whether the supplementary information is presented in a way that clearly differentiates it from audited financial statement. If this is not the case, auditor shall ask the management to change the presentation of unaudited supplementary information. If management refuses, auditor shall identify the unaudited supplementary information and explain in the auditor's report that such supplementary information is not audited. तो क्या हुआ बोलता है if it is not the integral part of financial statement, auditor shall evaluate whether the supplementary information is presented in a way that clearly differentiate it from audited financial statement. If this is not the case, auditor shall ask the management to change the presentation of unaudited supplementary information. If management refuses, then auditor shall identify the unaudited supplementary information and explain in the auditor's report that such supplementary information is not audited.